The Burning Question. I'm your host, Sara Zafar, and in this podcast produced by Oxfam in Pakistan, we will talk about climate justice, address some of Pakistan's grave ecological governance errors, and explore humanitarian responses to climate emergencies, what it is, how it's developed, and how communities respond to it. In the last episode, we talked about the science behind the 2022 floods in Pakistan, the over-engineering of the Indus Basin, and how drainage obstructions on the river Indus and slow early warning systems exacerbate the climate crisis that is threatening the lives and livelihoods of millions. To support the state in facing this uncertain future, local nonprofits can play a pivotal role as they have strong community networks and are in a better position to build communal trust and support in establishing good governance. 𝗕𝘂𝗶𝗶𝗶𝗶𝗋𝗂𝐻 paper on local governments and NGOs in the South argues that local nonprofits can act as better service providers and are more knowledgeable about the needs of poor and marginalized groups in their local context. This is because they work in close proximity to their target groups and have strong communication with civil society actors and government officials through personal contacts and frequent meetings. Envisioning long-term change, Oxfam has committed to enhance the capacities and leadership of local organizations through institutional strengthening. Partnerships have been both integral and central to the development programs, humanitarian response, and policy and advocacy initiatives at Oxfam. Local leadership is the foundation of Oxfam's new humanitarian approach. This strategic change in partnership is not new, but it is maturing. Oxfam has previously signed the Charter for Change, or C4C, and the Grand Bargain in 2016 and 2017 respectively. This was our public commitment to decolonize partnerships by shifting power resources to the local humanitarian leadership and adopt the key principles of partner-led response, which focus on joint responsibility, co-creation, flexibility and adaptability, complementarity, and equity. According to the Global Climate Risk Index 2021, Pakistan is ranked as the 8th country most vulnerable to the climate crisis, and local NGOs can play a key role in helping the government tackle this issue. 𝗕𝗂𝗶𝗶𝗶𝗶, team lead at Oxfam in Pakistan, explains the philosophy behind the term partner-led. मेरे ख्याल में ये कोई बिल्कुल नया अप्रोच नहीं है। जो ऑलरेडी ऑक्सफैम के पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ताकि पार्टनर्स का जो ये पावर का जो इक्विलिब्रियम है उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो पार्टनर के पास जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें आ जाए। तो ये जो ट्रेडिशनल था कैपेसिटी बिल्डिंग का जो एंगल था, इसको हमने डाइवर्ट किया है या इसको थोड़ा सा चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस की वो स्ट्रेंथ बने, ना कि इंडिविजुअल्स की। ये जो ओवरऑल हमारा जो एजेंडा है ग्लोबली डीकोलोनाइजेशन का, इस तरफ हम मूव कर सके विद प्रैक्टिकल स्टेप्स। वो प्लेटफॉर्म पार्टनर्स को दे दें जहाँ पे वो खुद मतलब उनकी जो पर्सपेक्टिव है वो आ भी जाए और उस पर्सपेक्टिव पे वो काम भी कर सके और वो डिसीजन भी कर सके, और ऑक्सफैम उसको एज ए इनेबलर देगी। हमने पार्टनर के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इनेबल किए हैं, हमने फैसिलिटेट किया, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सारा पार्टनर्स का। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाए यहाँ पे, एक तो ये कि आपको जो कम्युनिटी पर्सपेक्टिव है वो भी आ रही है, ठीक है, और वहाँ पे दूसरा ये कि इसको इनेबल करने का एक पर्पज़ ये भी था कि हम ऑक्सफैम या कोई और इदारा वो सारी उम्र नहीं रहता किसी एक ख़ास मुल्क में या जगह पे। तो आपको लोकल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना है, वो बिल्ड करना है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो
तो हम ये लेंस भी है कि ये प्रिपेयर्ड होंगे कोई अगर मेजर इमरजेंसी आती है, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन है पार्टनर्स की, इनकी रीच है, ये स्केल ले सकते हैं फ्यूचर में भी विदाउट एनी ऑक्सफैम के सपोर्ट की। 𝗕𝗂𝗶𝗶𝗶𝗃𝗂𝗏, Director of Arts Foundation, a women rights organization, will provide insights into the transformative change that has occurred within the organization. Initially focused on advocating for women rights issues, the organization has now expanded its scope to encompass humanitarian response and recovery efforts. आर्ट्स फाउंडेशन बेसिकली एक वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑक्सफैम का एक हिस्सा बनी, मगर जाहिर है जब ये क्राइसिस आए 2022 का फ्लड आया जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेवर बीन लाइक दैट, तो हमारे जैसे एक छोटा इदारा जो कि जाहिर है उनको उस तरह से ऑन बोर्ड लेना और जाहिर है इमरजेंसी जो रिस्पांस होता है उससे हम जो है ना शुरू अब तो रिकवरी के मरहले में है, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ऑक्सफैम ने अपनी जगह पर वो कहते हैं ना एक जाहिर है रिस्क भी होता है, एक थ्रेट भी होता है, जाहिर है कैपेसिटी के इश्यूज, फिर लोगों के साथ उन चीज़ों को टाइमली जो है ना चीज़ें पहुंचाना जो वल्नरेबल हैं, जो अफेक्टीज हैं, देन उसमें भी जो जाहिर है एक ऑक्सफैम का काम करने का एक पूरा स्टैंडर्ड है, जो भी SOPs हैं उनको खातिर भी लाना है, तो उसमें उन्होंने हमें एंगेज किया। तो मेरे ख्याल में वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे डेमोक्रेसी के अपनी तशरीह है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो मेरे ख्याल में ये जो पार्टनर्स लेड प्रोग्राम का जो तस्वुर है ऑक्सफैम ने बिल्कुल उसे बाय द पार्टनर, ऑफ द पार्टनर, मतलब फॉर द पार्टनर उन्होंने किया है। जहाँ तक जेंडर इक्वलिटी की बात है, एज अ WRO हमने अपनी जो टारगेट किया वो बहुत ही जो वल्नरेबल है, जो कि खवातीन है सबसे ज्यादा, क्योंकि मतलब ये है कि उसमें हमने पूरे का पूरा औरतों को कवर किया। अब अगर हम रिकवरी के फेज में आए तो हम कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्शन कमेटीज बना रहे हैं, उन्हें जो प्रो वुमन लॉज हैं, रेफरल पाथवेज हैं, उनके बारे में उन्हें जो बता रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चेंज है वो तो हमारे जो है ना सोचने का जो जाविया बदला है सबसे बड़ा, क्योंकि कुछ तो होते हैं कि इंटरवेंशंस, दूसरी होती है थिंकिंग। तो थिंकिंग जब बदल जाए तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाती है, फिर आपकी सेट ऑफ जो एक्टिविटीज और आप जो है ना टाइप ऑफ इंटरवेंशन वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे इससे पहले हम जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज को उस तरह से नहीं देख पा रहे थे अपने जो है ना इंटरवेंशंस में, या जो है एल्डरली पर्सन्स थे वो हम उस तरह से नहीं देख रहे थे, ट्रांसजेंडर इवन जो है उसको नहीं देख रहे थे, मगर हम इसका हिस्सा बनने के बाद हमने इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया है और उनको चुन के पूछ के अपनी कम्युनिटीज में, अपने इंटरवेंशन में तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्हें रखते हैं। Oxfam's approach to local humanitarian leadership, or LHL, is a holistic strategic partnership model, which is a way of shifting power to local actors and recognizes their critical role as the voice of affected communities. The Oxfam LHL model also confirms that affected populations and their institutions are not only passive victims of disaster, but are active agents of change and builds on their power to lead. We speak with 𝗕𝗂𝗶𝗶𝗶𝗶, Executive Director of Strengthening Participatory Organization, on her thoughts on working with Oxfam as a partner. We have been working with Oxfam since 2005, I would say. So being a civil society organization, I don't want to say that Oxfam is our donor, but I see it as a partner, and we have really enjoyed working with Oxfam. Oxfam has always given us the flexibility to basically, bring the perspective that we feel is important, because we are more connected with the communities, and we feel that the organizations, the NGOs should have the liberty and freedom to decide where to work, how to do that, how to extend our projects, and
primarily the most important component is that to have it to design the projects with the co-creation perspective. We have been, consulting Oxfam whenever we feel that we need to, have technical inputs or guidance from our partner. So वो कंफर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ाइन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक जो है वो हमें हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट और वो फ्रीडम और वो लिबर्टी दी गई है, और मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक SPO जो कि कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी के लिए काम करती है, एंड वी स्ट्रांगली बिलीव इन the core principle of inclusivity, where we can say it like shared values हमारी जो हैं वो बहुत common है. The inclusivity part is very much respected at both SPO and Oxfam's level, जिसमें कि हम हमेशा से इंक्लूसिविटी में द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, और ऑक्सफैम के प्लेटफॉर्म से हमें ये भी मौका मिला है कि हम इन पर्सपेक्टिव्स को या इन कोर वैल्यूज़ को जो है वो ना सिर्फ खुद प्रैक्टिस करें बल्कि कम्युनिटीज़ तक भी उसको लेकर जाएं. Along with early recovery interventions to the flood response, Oxfam in Pakistan is joining the global fight for climate and gender justice with support from local influencing partners. Sustainable Policy Development Institute (SDPI) is one of Oxfam's influencing partners who have been leading the discourse on gender, climate justice, clean energy, and ecological governance in Pakistan. We speak with Dr. Shafqat Munir on working with Oxfam and hear his thoughts over the key ideas behind their influencing strategy. I think influencing is a wider agenda, and it cannot be completed without other people, those who are on ground or those who are researching or those who have upward linking to the policy makers, and that's the importance, and that is why I think Oxfam's partner-led approach is very important, and particularly on influencing. If many players are there, they can better influence the policy maker. पाकिस्तान का जब भी आप देखें किसी एरिया पे रिसर्च हम करते हैं, बात करते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल लिटरेचर तो बहुत मिल जाएगा. The literature generated through the community and through the people in Pakistan वो आपको कम मिलेगा क्योंकि रिसर्चिंग के बहुत कम मौके मिलते हैं. लेकिन what SDPI does is that हम अपनी रिसर्च को ग्राउंडेड रिसर्च इसलिए कहते हैं कि वी गो टू द कम्युनिटीज़, वी गो टू द पार्टनर ऑन ग्राउंड. वी डोंट हैव ऑफिसेज अक्रॉस पाकिस्तान बट वी हैव पार्टनर्स विद अस. सो पार्टनर लेड अप्रोच का अगेन मैं इसलिए SDPI और ऑक्सफैम में जो मुश्तरका चीज़ है वो पार्टनर लेड अप्रोच है. 2022 का जो फ्लड है इसका जो रिस्पॉन्स है ये लार्जली हैंडल्ड बाय द लोकल प्लेयर्स. बट in absence of the international push factor, we had certain challenges also. यानी ना हम लोकल लेड ऑपरेशंस को या लोकल लेड एक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ना हम इंटरनेशनल जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको वाइप आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन फ्लड 2010 बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल जो INGOs हैं उनकी एक्सपर्टीज़ थी जिन्होंने कम्युनिटी के अंदर काम किया था, कम्युनिटी को तैयार करते थे कि कैसे फ्लड आना तो रिस्पांस करना है. बट दिस टाइम और जब फ्लड आ जाता था रेस्क्यू के ऑपरेशन कैसे करने हैं, किस तरह इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव कैसे बनाना है रिस्पांस को, जो ख़ास तौर पे जिसमें वेमेन की स्पेसिफिक नीड का ख्याल हो, एल्डर्स का एंड पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज़. ये टेक्निकल एक्सपर्टीज जो हमें मिलती थी वो यहाँ पे बड़ी हद तक लैकिंग थी बिकॉज देयर वर हार्डली अ फ्यू INGOs वर्किंग ऑन ग्राउंड इन दिस रिस्पॉन्स. Oxfam was one of them, but many other dozens of organizations are now out this time in 22. वही सारे टेक्निकल स्किल अगर नीचे लेवल पे लोकल ऑर्गेनाइजेशनों को थ्रू दी पार्टनर लेड अप्रोच जैसे ऑक्सफैम कर रही है बाकी भी इसको करें तो नीचे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी. कैपेसिटी बिल्डिंग जब हो जाएगी
तो खुदा न खासा नेक्स्ट टाइम कोई फ्लड हिट करता है, कोई इमरजेंसी हिट करती है, तो ये जो लोकली इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी थ्रू द इंटरनेशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इंटरनेशनल टेक्निकल सपोर्ट, वो इस काबिल हो चुकी होंगी कि जब ये INGO नहीं भी हैं तो उनको कैसे कोप कर सकें सिचुएशन को. आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी थिंक द पार्टनर लेड अप्रोच इज़ वर्किंग हियर. Oxfam understands partnerships as mutually empowering relationships, which are aware of power imbalances and focused on mutual growth, organizational development, institutional strengthening, and above all, on achieving impact. Oxfam in Pakistan is reconfiguring its role in emergencies. Together with our partners, we have established Climate and Humanitarian Action Network for Growth and Engagement, or CHANGE, a platform which envisions locally led climate change and humanitarian action in Pakistan. ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सारे लीडरशिप है, चाहे वो पार्टनर हमारे इन्फ्लुएंसिंग के हो, जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के हो, या इवन हमारे जो वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन है और इसको हम आगे लेना चाह रहे हैं, वो बहुत इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी. I really have great respect for Oxfam, जिन्होंने कि हमें ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का जिक्र मैं करना चाहूँगी जो कि इन्फ्लुएंसिंग के हवाले से है, कि हम किस तरह से जो ऑक्सफैम के जो पार्टनर्स हैं वो इकट्ठे मिल कर के जो हमारा जो स्पेसेस हैं उनको रिक्लेम कर सकें. और व्हेन आई से रिक्लेम मींस दैट वी आर बेसिकली स्ट्रगलिंग and we will be asserting ourselves to basically give this message to the financial community that एक तो ये कि जो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट का काम हो, उसमें आपको पार्टनर्स को जो है वो अहमियत देने की ज़रूरत है. पार्टनर्स को डिज़ाइनिंग में से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और बेस्ड ऑन देयर लर्निंग्स, उसमें जो स्पेस चाहिए वो हम उसको रिक्लेम करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो स्पेस हमारे पास कहीं पे भी और जगह पे मौजूद नहीं है. और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा मॉडल होगा जो बाकी फाइनेंशियल पार्टनर्स को भी देखने की ज़रूरत है, उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपने पार्टनर्स के साथ लर्निंग्स की बेसिस के ऊपर बात कर सकें. Our innovative approach to decolonizing partnerships has been driven by a key assumption, that we make ourselves redundant. This transformative model challenges us to rethink our very existence in the partnership landscape, pushing us towards a more selfless and impactful approach. In the next episode, we will talk about climate change and its link to interpersonal and structural gender-based violence, and speak to those leading the ecofeminism movement in Pakistan. This will be part of Oxfam's campaign on 16 days of activism against gender-based violence. If you have any burning questions of your own, do reach out at szafar@oxfam.org.uk or reach out on our social media platforms and we will try to address them in our episodes. Till then, stay aware, stay curious, and stay positive.